friends, my name is S.K. Pandey from St. Jude's Vidyalaya, Barauni, one of the branches of Satyam Shivam group of institution. Friends, today whole world is facing the fatal problem, coronavirus. This epidemic is fatal for human life. All the experts, even our PM, is continuously suggesting us to stay at home, keep our social distance, and live in the quarantine. Students, we will have to follow the instructions of our doctors, our experts, even our PM. But at the same time, some works cannot be stopped, just such as learning, feeding. So, learning is equally important as the food is necessary for us. Students, at present day, all the teaching institutions had closed, and we know that time had not gone. Time is passing continuously with the usual speed. So, we will have to utilize this time according to our own convenience. We will have to keep our study continue, especially for the class 12. This is very important time because their examination, their syllabus is not going to wait for the lockdown. So I hope that you all are safe and healthy and following the instruction of the experts. You all are well in your house and you are very safe. Students, today I am going to start literature class for class 12, and the book I will start is Flamingo. We are going to learn the first lesson, that is the last lesson. Before we start our class, I would like to clarify that I am going to use both of the languages, Hindi and English. Basically, the students like to listen the lecture in English for the English class, but for the few weak students, it's very necessary to use Hindi language. Translate in Hindi the story. It becomes very easy for them to understand. So, in this class, I will try my best to explain this lesson in such a way that it will just settle down in your memory forever. Before we start this lesson, I would like to show you some key points, key words, what are necessary for the starting in the beginning of the lesson or to understand the lesson properly. For gadget or the equipments for the such class, but I will try my best. What I have, I will provide the convenience way for your comfortable understanding. Before we start the lesson, I would like to focus my camera on a notebook where I will show you some key points or keywords which are very necessary before starting the lesson. So I'm just going to show you on the notebook. Here the book Flamingo. Lesson, the last lesson. The name of the writer, Alphonse Daudet. And the keywords, what I would like to introduce you in Hindi and English both. First word is blushed. Blushed means show shyness, यानी शर्मा जाना, शर्म से चेहरे का लाल हो जाना. सेकेंड वर्ड solemn, इसका मतलब होता है फॉर्म या डिग्निफाइड पर्सन, स्ट्रिक्ट पर्सन जो होते हैं. तीसरा वर्ड है रिचेस, इसका मतलब होता है अनहैप्पी पर्सन, दुखी व्यक्ति. नेक्स्ट वर्ड हमारा है इंस्लैब्ड. इंस्लैब्ड मीन्स मेड स्लैब, यानी किसी को बंधुआ बना लेना. नेक्स्ट वर्ड है होप वाइन. होप वाइन एक तरह का क्लाइंबर है, एक तरह का लत्तर जिसको हिंदी में कहते हैं. यह इसका यूटिलाइजेशन वाइन बनाने में किया जाता है. नेक्स्ट वर्ड है ट्रेम्बल्ड. ट्रेम्बल्ड का मतलब होता है शुक
यानी कांपना, और द लास्ट वर्ड्स जो 3 वर्ड का एक कॉम्बिनेशन है, फ्रेंच वर्ड है विव ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, मीन्स फ्रांस सदा अमर रहे, जीवित रहे। The next topic about the story we are going to know is theme or the central meaning of the story। कहानी का केंद्र बिंदु या कहानी क्या हमें सिखाने की कोशिश कर रही है, हम उसके बारे में जानेंगे। और पहला थीम स्टोरी का इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग, यानी हमारी मातृभाषा की क्या इम्पोर्टेंस है, महत्व है। इस कहानी में मातृभाषा की इम्पोर्टेंस, मदर टंग की इम्पोर्टेंस को दिखाने की कोशिश की गई है, फ्रेंच लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस को दिखाने की कोशिश की गई है। सेकंड है इफेक्ट ऑफ वार, युद्ध का क्या इम्पैक्ट हमारे लाइफ में पड़ता है, या किस तरह से फाइट, वॉर जो होता है, बैटल जो होता है, हमारी लाइफ को, ऑर्डिनरी पीपल के लाइफ को या किसी कंट्री के सिटीजन्स को कैसे इफेक्ट करता है, उसके बारे में भी यह स्टोरी बताने की कोशिश की है, या इस स्टोरी में राइटर ने इसे बताया है। तो इट मीन्स दिस स्टोरी इज गोइंग टू कन्वे द मैसेज दैट हाउ द वॉर डिस्ट्रॉयज आवर लाइफ एंड मेक us to fall in trouble। Third thing which I have not mentioned here is importance of teacher and teaching। In our life sometimes we come across the situation that we find ourselves some subject become difficult to understand, कुछ विषय हमारे लिए कठिन हो जाते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते हैं उन सब्जेक्ट्स को। लेकिन क्या हमने कभी कोशिश की है यह जानने की, एवर हैव यू ट्राइड व्हाई दिस सब्जेक्ट्स बिकम डिफ़िकल्ट, सम सब्जेक्ट बिकम इजी एंड सम बिकम डिफ़िकल्ट। तो इस लेसन में ये भी बताने की कोशिश की गई है कि यदि हम लोग पूरी तरह से अपने शिक्षकों के पढ़ाए हुए चीज़ों को ध्यान से सुने, इफ़ वी फोकस ऑन द टीचिंग ऑफ आवर टीचर, व्हाट दे वांट टू टीच अस, इफ़ वी ट्राई टू concentrate our mind on the topic, it will be easy for us to understand। so इस लेसन में हम लास्ट में जानेंगे कि किस तरह से इस मैसेज को भी लेसन में कन्वे करने की कोशिश की गई है। द नेक्स्ट इज मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी के मुख्य पात्र कौन कौन हैं? फर्स्ट है फ्रेंच, जो कि इस कहानी का हीरो कहें, मेन पात्र कहें। दूसरे हैं मिस्टर एम हेमल, और तीसरे हैं ब्लैक स्मिथ, जो कि छोटा सा पार्ट प्ले कर रहे हैं, बहुत ही छोटा सा एक डायलॉग है इनका। और इस तरह से हम लोग आगे कहानी की कुछ बातें और जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू गेट द इंट्रोडक्शन ऑफ राइटर एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर स्टोरी। सो लेट स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर। Alphonse Daudet was a French novelist and short story writer। The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War 1870 and 1871। अल्फोंस डूडेट एक फ्रेंच नोवेलिस्ट हैं, नोवेल राइटर हैं। उन्होंने छोटी छोटी बहुत सारी कहानियाँ भी लिखी हैं, और ये जो कहानी लास्ट लेसन है, इन्होंने उस समय लिखा जब फ्रांस और जर्मनी के बीच युद्ध चल रहा था। यह समय 1870 और 1871 का था। The Prussian force under Bismarck attacked France in the year 1870। All the Germans stood by Prussia and France was defeated। The France district of Alsace and Lorraine passed into Prussian hands। Prussian rulers disallowed the teaching of French in the school of these two districts। The French teachers in these schools were asked to leave। This story described the last day of one such French teacher in this school। His name is Mr. M. Hamel। यह कहानी उस समय बनी जब पर्शिया और जर्मनी के बीच युद्ध हो रहा था 1870 में, और पर्शिया की जो सेना थी जिसको बिस्मार्क लीड कर रहा था, उसने फ्रांस के ऊपर अटैक किया।
और जितने जर्मनी के लोग थे प्रूसिया के साथ खड़े हो गए, जिसके कारण उसके दो जो डिस्ट्रिक्ट थे, जो एल्सेस और लॉरेंस के नाम से जाने जाते थे, उनके ऊपर इनका कब्जा हो गया। प्रूसिया के रूलर ने जर्मन भाषा की पढ़ाई को आगे लाने की कोशिश की और फ्रेंच भाषा को बंद कर दिया। उन्होंने सख्त आदेश दिया कि फ्रेंच टीचर्स, जितने भी फ्रेंच शिक्षक हैं, वो एल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों को छोड़कर चले जाएं और उनकी जगह पर जर्मन पढ़ाने वाले शिक्षकों की बहाली होगी। यह कहानी एक फ्रेंच टीचर जिनका नाम मिस्टर एम हेमेल है, उनके लास्ट डे की स्कूलिंग या वर्किंग डे के बारे में बता रही है। उनका लास्ट डे था, यानी अंतिम दिन उस स्कूल में। और यहाँ से हम लोग अब आगे कहानी को पूरी तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में जानते हैं। स्टोरी बिगिंस विद द लिटिल बॉय फ्रेंच। फ्रेंच was getting late to reach school, and he was not interested in attending the class of Mr. Hamel, who was the very strict teacher. He was teaching French language. At the same time, he had given homework to learn about participles. French had not learned about participles and he was afraid of. Once he thought that instead of going to school, he should spend his time outside in bright sunlight under the shade of the tree. But anyhow, he managed to make himself understand it would be better for him to go and attend the class. When he was in the way, he found that the people had gathered near the bulletin board, and he knew it. All the bad news regarding the battle, regarding the country, had come on that bulletin board, and so he thought there might be other bad news for his country and for the citizens. But he didn't have time to know why the people had gathered and what type of news had came there. So he started running fast to reach school as fast as possible. Blacksmith saw him that he was in hurry. He told him that friends, he had a lot of time to reach the school. He had enough time to reach the school. But friends thought he was cracking joke or sarcastically he was telling him. So he increased his speed. When he reached near the school, near the building, he found that there was pin drop silence. It was unimagined condition, because usually during the school period, the different types of sound, such as the sound of the whistling of scale of his teacher, reciting of poems, alphabets of the children, lot of commotion could be heard there. But on that day, it was very much silent, like the Sunday or the holiday. He was unable to understand how was it possible. Prince made a plan to enter in the class. He thought when the students were creating commotion, he would hide himself and secretly enter in the class to his bench. But when he reached near the class, the situation was totally different. All the students were sitting quiet, and even the old people of the village had occupied the back benches. There was no any chance to hide himself from the sight of Mr. Hamel. He knew that Mr. Hamel was going to punish him, but anyhow he tried to enter in the class. But it was shocking.
On that day, Mr. Hamill behaved strangely. Instead of scolding him, instead of beating him, instead of punishing him, very smoothly, very comfortably, and in a very soft voice, he allowed him friends to enter in the class. When friends saw that his teacher was is